बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट बायोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं MDCAT 2024 के सॉल्यूशंस के हवाले से और पर्टिकुलरली हमारा फोकस होगा बायोलॉजी सेक्शन के ऊपर। और इसमें हम देखेंगे कि कौन से MCQs आए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर्स में MDCAT में अपेयर होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने इस साल MDCAT दिया है वो भी इस वीडियो को देखें और अंडरस्टैंड करें कि खुदा न खास्ता अगर कहीं पर वो मिस्टेक करके आए हैं तो वो कहाँ पर हुई और उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता था। चलें विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। So, जो पहला एमसीक्यू बायोलॉजी में था दैट वाज एग्जांपल ऑफ वायरसेस हैविंग अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड दैट इज विद 252 कैप्सोमेयर्स इज एडिनोवायरस, टोबैको वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर जो राइट आंसर था दैट वाज एडिनोवायरस, ऑप्शन ए। टोबैको वायरस एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जबकि इन्फ्लुएंजा जो स्फेरिकल है। तो राइट आंसर वाज एडिनोवायरस। The second question was the complete mature and infectious particle of virus is known as genome, capsomere, prion या envelope. इसके अंदर जो right answer था that was capsomere. Capsomere was the right answer. The third was the causative agent of measles is poxvirus, papillomavirus, trichomonavirus and paramyxovirus. इसके अंदर जो right answer था that was paramyxovirus. जो पॉक्सी वायरस है वो स्मॉल पॉक्स को कॉज करता है जबकि जो पिकोन वायरस है वो कॉज करता है कॉमन कोल्ड को। So the right answer was paramyxovirus. The next question was, in the life cycle of a bacteriophage, the lysosomes are required in which of the following steps of infection process? Genome injection, penetration, replication, and absorption. इसके अंदर जो right answer था that was penetration. Okay, so the next answer हमें पता है कि during the penetration cell wall की digestion करनी होती है बैक्टीरिया को, so that's why lysosome इसमें involve होते हैं. The next is dash is transmitted through infected blood and hypodermic syringes. ऐसा कौन सा वायरस है जो कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ और हाइपोडर्मिक बिलो द स्किन जो सिरिंजेस हम लगाते हैं उसकी वजह से ट्रांसमिट होता है। इसके अंदर ऑप्शन हमारे पास थे HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, माइक्रोबिली वायरस जो मीजल्स कॉज करता है और विब्रियो कॉलरा या कॉलरा वायरस। इसके अंदर जो राइट आंसर है दैट वाज HIV. HIV was the right answer. The question number 6 was in Kalman cycle CO2 reacts with RGBP to produce 3PGA, G3P, 6 carbon unstable intermediate and 1,3-bis phosphoglycerate. इसके अंदर जो राइट आंसर था दैट वाज द 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, ये चूंकि अनस्टेबल होता है सो दैट्स व्हाई दैट्स द राइट आंसर। हमें पता है आरजीबीपी इज अ 5 कार्बन मॉलिक्यूल, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मैच करता है तो उसके बाद वो 6 कार्बन अनस्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। सेकंड ऑप्शन, द सेवंथ क्वेश्चन वाज which option is correct about a chlorophyll molecule? It's a chemical formula C55XMTO6 and that is the right answer. पहला ही ऑप्शन राइट है। देखिए जब आपको एक एमसीक्यू के अंदर पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट आंसर, तो उसके अंदर आपको अगर पहला ही करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है और उसके अंदर कोई नीचे ऑप्शन डी है, मतलब बोथ बी एंड सी इस तरह के नहीं है, तो यू शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट, यू शुड गो फॉर इट. The next question was in journey of electrons from photosystem 2 to photosystem 1, plastocyanin is reduced by कौन सा ऐसा है जिससे प्लास्टोसियानिन रिड्यूस होता है? इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन थे प्लास्टोक्यूनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स P700 एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1 फोटोसिस्टम 1. इसके अंदर जो राइट आंसर था दैट वाज साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बेसिकली इसको रिड्यूस करता है प्लास्टोसियानिन को. Okay, the next question was enzyme NADP reductase is responsible for. Enzyme NADP reductase किस चीज के लिए responsible है? Reducing NADP positive, oxidizing NADP positive, reducing ferredoxin and reducing P700. इसके अंदर जो right answer reductase है तो ये reduce कर रहा है, reducing NADP positive was the right answer. Number 10 question was the photosystem 2 during light reaction receives electrons from splitting of water, plastocyanin, प्लास्टोसियानिन एंड फेरिडॉक्सिन. और इसके अंदर राइट आंसर है वाटर. हमें पता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो फिल की जाती है. ऑप्शन ही वो राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 वाज monosaccharides have a general formula represented by CnH2O whole n, CH2ON, C2H2ON and CnH2n. और इसके अंदर जो राइट आंसर था दैट वाज CnH2ON. That was the right answer. That is the option A was the right answer. Okay. So next is what is the percentage of water in bone cells? 70%, 20%, 99% and 60%. इसके अंदर जो ऑप्शन है that is the 20%. हमारे बोन सेल्स के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो 20% होती है. So option D was the right answer. Okay. Next is the question number 13.
When glycerol reacts with fatty acid, which type of chemical bond will form? जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किस किस्म के बॉन्ड्स फॉर्म होंगे? इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस और ईस्टर बॉन्ड्स, ईथर लिंकेज, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। और इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है दैट इज द ईस्टर बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए वाज द राइट आंसर। ईस्टर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। Question number 14 के अंदर polysaccharides in plants are synthesized by the process of hydrolysis, oxidation, condensation और glycolysis। और इसके अंदर right option was condensation। Polysaccharide। Question number 15 के अंदर अगर हम बात करें तो which of the following processes is involved in breakdown of protein into amino acids? Condensation, hydrolysis, glycolysis and fixation। तो question number 15 hydrolysis, breakdown process hydrolysis होता है, तो हम इसके अंदर will go with the option D, that is the hydrolysis। Question number 16 was the hydrophilic end of phospholipid molecule is polar because of the presence of glycerol, amino group, fatty acids and phosphate group, and the option is the phosphate group। phospholipid है तो इसमें जो phosphate group होता है इसकी वजह से इसके अंदर hydrophilic characteristics आती हैं। So option D was the right answer। Question number 17, which monosaccharide will form a glucopyranose ring in solution? इसके अंदर ऑप्शंस हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, एंड द राइट ऑप्शन वाज ग्लूकोज, दैट इज द ऑप्शन बी। इसके अंदर जो ऑप्शन डी था दैट वाज द राइट आंसर, ग्लूकोज। हमें पता है कि एक्व सॉल्यूशन के अंदर ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर रिंग कॉल्ड ग्लूकोपाइरानोज फॉर्म करता है इन द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। So glucose was the right answer. The next was chloroplast membrane bounded bodies containing enzymes, cisternae, pigment and cristae। इसके अंदर देखें दोनों ऑप्शन enzymes और pigment both are right, but enzymes are present in their structure as well, so we will go with the pigment because ये एक ऐसा उनका क्या कहेंगे उसको identifying feature है pigment की presence। Question number 19 is which of the following is the function of Golgi complex, intracellular digestion, autophagy, autolysis and processing of cell secretions? और इसके अंदर right answer was processing of cell secretions। बाकी तीनों lysosomes के functions थे। अच्छा, next is the nucleus takes dyes due to the presence of। इसके अंदर option है हमारे पास chromatin, lipid, metalines and thallikides। thallikides से मिलता है। इसके अंदर जो right answer था lipid, chromatin was the right answer। chromatin की presence की वजह से वो dyes normally absorb। Next question was the organelles only found at seedling stage in oil seed plants are peroxisome, glycosome, microbodies, and vacuoles। Microbodies is a general term for peroxisome and glycosome, but we will go with the most specific one, that is the glycosome. So option B will be the right answer। Question number 22 में posterior lobe of pituitary produce ADH, TSH, ACH and FSH। इसके अंदर ADH is the right answer। ADH वाहिद है जो कि posterior lobe of pituitary। posterior lobe of pituitary दो किस्म के enzymes को hormones को secrete करता है, ADH को और oxytocin को। तो ADH will be the right answer। The next one is in human myelinated fibers, nerve impulse travels at the speed of। इसके अंदर ऑप्शन है 100 to 120 मीटर पर सेकंड, 130 to 150 मीटर पर सेकंड, 160 to 180 एंड 190 to 210। और इसके अंदर ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर, 130 से 150 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। Okay, next, Nissls granules are groups of mesosomes, lysosomes, ribosomes and chromosomes। और इसके अंदर हमारे पास राइट ऑप्शन वाज राइबोसोम्स। हमें पता है कि Nissl granules न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, granules स्ट्रक्चर्स हैं। तो राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये कॉम्प्लेक्स होता है, तो वी विल गो विद द राइबोसोम्स। During non-conducting state, the neuron membrane is permeable to efflux of potassium ions, sodium ions, calcium ions, and chlorine ions, and the right answer is the calcium ions। हमें पता है कि रेस्टिंग स्टेज के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर लीकी गेट्स मौजूद होते हैं, तो वो लीकी गेट्स जो हैं वो पोटेशियम को बाहर को मूव करा रहे होते हैं। सो दैट्स व्हाई। Okay, the next question, which of the following neurotransmitter is lying outside the CNS? CNS से बाहर कौन सा, PNS का मेजर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? इसके अंदर एसिटाइलकोलाइन, एंडोर्फिन, डोपामिन एंड गाबा। इसके अंदर राइट आंसर वो एसिटाइलकोलाइन। PNS का एक बहुत ही फेमस न्यूरोट्रांसमीटर है। Question number 27 was depolarization during conduction of nerve impulse is due to inward movement of sodium ions, inward movement of potassium ions, outward movement of potassium and outward movement of सोडियम आयंस। एंड द राइट आंसर इज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस। हमें पता है कि डिपोलराइजेशन तब होती है जब सोडियम गेट्स ओपन होते हैं और सोडियम का एक इन्फ्लक्स होता है बड़ी बल्क अमाउंट में। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is not a feature of autonomic nervous system? autonomic nervous system ऐसा nervous system है जो कि हमारे involuntary actions को कंट्रोल करता है। इसके अंदर पहला है रेगुलेशन, रेगुलेट रिस्पांस ऑफ विजिबल ऑर्गन्स, बिल्कुल ये इसका फंक्शन है। उसने पूछा है नॉट अ फीचर, तो ऑप्शन ए इज नॉट राइट। The option B is regulate response of skeletal muscles। skeletal muscles को response तो ये नहीं regulate करता।
वो तो हमारा सोमेटिक करता है, सो ऑप्शन बी कुड बी अ राइट आंसर। रेगुलर रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स एंड रेगुलर रिस्पॉन्स, तो ऑप्शन बी वाज द राइट आंसर। Next question 29 is the taste receptors is an example of mechanoreceptors, nociceptors, photoreceptors and chemoreceptors. चूंकि taste receptors हैं chemicals के taste को, तो chemoreceptors का right answer। photo light के साथ हैं, nociceptors pain के साथ हैं, mechanoreceptors touch के साथ release करते हैं। Which of the following belongs to the chordates? Spider, earthworm, troutfish and starfish, and the right answer is the troutfish. इसमें option C was the right answer, कि troutfish is the example of a chordates. Okay, so the next is which one of the following is incorrect regarding rate of enzymatic action? Enzymatic increase in enzyme conservation increases the rate, बिल्कुल ठीक है। ये लेकिन उन्होंने पूछा है which of the following statements is incorrect? Okay, so increase in enzyme concentration reduces the rate? नहीं, that's not right. That's not right. तो हम इसको select करेंगे। All enzymes work at their maximum rate at, बिल्कुल ठीक है। All enzymes work at their maximum rate at optimum pH, बिल्कुल ठीक है। So option D was the right answer. Question number 32 के अंदर useful model of enzyme activity suggests that an enzyme cannot modify its active status, नहीं ये तो सही नहीं है। Can bind नहीं to a single substrate, ये भी ठीक नहीं है। Can catalyze related reaction, ये तो कर ही सकता है। Usually belong to non-regulatory non-regulatory enzymes, नहीं, that's not the right answer. So the C is correct, can catalyze a regulatory reaction. उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द क्रोमोसोमल abnormality internal syndrome is represented by x triple x x x x x y y x naught and double x y, so the right answer is x naught। इसके अंदर y क्रोमोसोम एब्सेंस होता है, तो that's why we represented by x naught के साथ। Next question was the change in frequency of alleles at a locus that occurs by chance is known as mutation, genetic drift, non-random mating and speciation। by chance है तो genetic drift की बात करेंगे, तो option B is the right answer। The next one is identify the correct pair of vestigial organs। Vestigial organs ऐसे organs होते हैं जिनके बारे में हम ये assume कर रहे हैं कि इनका कोई भी नॉन फंक्शन नहीं है। ह्यूमंस के हवाले से अगर बात करें, ईयर मसल्स एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, यस दैट्स एक्चुअली राइट। ये इन दोनों का ही कोई नॉन फंक्शन नहीं है। द सेकंड इज हार्ट एंड हो प्लीज, हार्ट एंड लिवर आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी इज ईयर मसल्स एंड लिवर, दैट्स आल्सो नॉट राइट। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड हार्ट, दैट्स आल्सो, सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, which of the following increases variation within a gene pool? एक जीन पूल के अंदर कौन से वेरिएशंस को कॉज करने वाले प्रोसेस हैं? इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है क्रोमोसोम इन्वर्जन, क्रॉसिंग ओवर, जीन म्यूटेशन एंड रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर इज द वन, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। मेयोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है और यही वेरिएशन का मेजर कॉज है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर अगर हम बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ट्रू? ठीक है, इट अफेक्ट्स वेरिएशंस दैट आर हेरिटेबल, that is right. It is select हमने उन्होंने पूछा है not true, so it affects variations that are, yes that's right, natural selection करता है। it is selected by a breeder, no no no, natural selection is not selected by a breeder, so this is not true। it can improve the adaptation of species, बिल्कुल ठीक है। it is regional in nature, ये सारे ठीक हैं। the second option B wasn't right। okay, so let's go। Okay, question number 38 was the formula calculating the frequency of genotypes and alleles in a population gene pool is known as Hardy-Weinberg equation। That's very right। Lamarck equation ऐसी कोई equation थी नहीं, Darwin भी ऐसी कोई equation दी नहीं थी, और James Hutton equation भी is not the right answer। So Hardy-Weinberg equation is the right answer for that। Next question was 39. The idea of inheritance of acquired characteristics was presented by Jean-Baptiste Lamarck, बिल्कुल ठीक बात है। Charles Darwin, Thomas Malthus and Alfred Wallace, इसके अंदर Lamarck was the right option। Okay, so the next question is, according to endosymbiosis theory, flagella may have derived by the ingestion of। endosymbiosis ये कहता है कि एक सेल ने दूसरे एक ऑर्गेनिज्म ने दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैगोसाइटोज किया और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के बजाय दोनों सिम्बियोटिक मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप के अंदर रहने लग गए। और इसका जो राइट आंसर है वो है एमीबॉयड प्रोकैरियोट, एरोबिक बैक्टीरियम, स्पाइरोकीट एंड स्पाइरिलम। तो इसके अंदर स्पाइरोकीट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी वाज द राइट आंसर। Okay, the 41 question was insulin converts glucose into vitamins, minerals, lipids, and cortisone। ये थोड़ा सा tricky था, but the right answer is the lipids because glucose very fatty fats के अंदर convert करता है, so we will go with option C, that's the lipids। The next question was about 70% of the carbon dioxide in blood is carried as carbonate, bicarbonate, tricarbonate, and carbonic acid। carbonic anhydrase एक enzyme है, तो इसके अंदर bicarbonate is the right answer, that's option B।
43rd question was range of normal total lung capacity in humans is 5 to 6 liters, ठीक है, 8 to 9 liters नहीं, बहुत ज़्यादा होता जाएगा, 5 to 6 liters is the right answer, option A. Okay, 44th question was respiration in pseudomonas bacteria is, pseudomonas bacteria के अंदर respiration aerobic है, anaerobic है, facultative है, facultative है, microaerophilia. So the right answer is facultative. इसके अंदर aerobic और anaerobic both type of respiration होती है. Question number 46 was autotrophic mode of nutrition in organism depends upon saprotrophic mode, parasitic mode, photosynthesis mode, and obligate mode. इसके अंदर photosynthetic, autotrophic हैं, they make their own food, so we will go with the option C as the photosynthesis mode. Question number 46 was prokaryotic cells lack mesosomes, ribosomes, storage bodies, and membrane bond. इसमें membrane bond होगा, इसके ऊपर हम जाएंगे option B के ऊपर. Okay. So the question number 47 was bacterial genome becomes diploid. Bacterial genome कब diploid होता है? After fertilization of gametes, after before spore formation, during binary fission and after binary fission. तो इसका the right answer was during binary fission. Binary fission के दौरान वो diploid हो जाता है जब दो उसके अंदर replication होती है उसके bacterial genome की. Question number 48. One of the following is correct regarding flagella? Made up of macrofilaments? No, that was tricky. Macrofilaments के नहीं बने होते. Contains centriole? नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते. Originates from basal body. That's the right answer. Option C was the right answer. They do originate from basal bodies. And the D was there in Mackay, which is also wrong. Okay, the next question is which option is correct about endospores? Endospores के हवाले से which that has a short dormant period? नहीं, that's not necessary. Contains moisture for survival? That's also not true. Metabolic बिल्कुल भी नहीं active होते and endures extreme conditions. So option D was the right answer, that they endure the extreme conditions. Okay, question number 50 is bacteria divide at exponential rate during which growth phase? कौन सा growth phase के अंदर lag, log, stationary and decline, and the option right option was the log phase. Lag phase के अंदर वो खुद को adopt करता है, stationary के अंदर it's equal और decline के अंदर उनका growth rate कम हो जाता है और उनका death rate increase कर जाता है. Question number 51 was mesosomes are the invagination of bacterial cell structure. कौन सा cell wall, cell membrane, cyst and cervix, and the right option is cell membrane. Option B was the right answer. That was the cell membrane. Okay, next, if you do female reproductive system consists all of the following except ovaries, oviducts, cervix and seminiferous tubules. Seminiferous tubules इसके अंदर नहीं होते, so option D was the right answer. हमने पूछा कि consists all of the following except, इन तीनों बाकी ovaries, oviduct और cervix के अंदर होते हैं लेकिन seminiferous tubules नहीं होते. Which of the following hormone is responsible for the labor pains in human female at the time of birth? इसके अंदर estrogen, progesterone, oxytocin and corticosteroid, and the right option is oxytocin. Oxytocin produce करता है labor pains. Question number 54 was fluid secreted by circular cells provides liquid medium, protection and nourishment to oocytes, sperms, polar body and spermatogonia, and the right answer is sperms. ये sperms को circular cells protection भी देते हैं और nutrition भी देते हैं. Question number corpus luteum. Question number 55 was corpus luteum during female reproductive cycle produces testosterone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, and progesterone. और corpus luteum से हमें पता है कि progesterone release होता है, so option D was the right answer. Okay, this is the question number 56. Question number 56 says due to the process of follicle atresia, follicles reach follicle atresia is the death of the follicles, right? So follicle reaches maximum size, नहीं, follicle regenerates, that's right. Grafting follicle ovulates. नहीं, ovulation इसके अंदर नहीं है, follicle starts to mature and the option is follicle degenerates. Option B was the right answer. Okay, next was the main function of the epidermis is to transport sperms, connect with urethra, produce semen, hold the process of spermatogenesis. और इसके अंदर जो transportation of the sperms है, that is the right answer. इनमें से हम उसको transport A is the right answer. 58 was immediate next stage of spermatogonial differentiation is. इसके अंदर हमारे पास option है secondary spermatocytes, spermatids, primary spermatocytes, and sperms, and the right answer is the C, that is the primary spermatocytes. C is the right answer. Okay, next one is which of the following is included in paired cranial bones? Paired cranial bones के अंदर कौन सा included है? Temporal, occipital, frontal, and humor. Humor तो खैर cranial है ही नहीं. Frontal हमारी और occipital both are single unpaired हैं. So temporal is the right answer. Okay, question number 60 is which of the following respiratory disorder is an example of autoimmune disease? Sciatica, spondylosis, rheumatoid arthritis, and rickets, and the right answer is rheumatoid arthritis.
arthritis. That is option C will be the right answer. Sciatica nerves की है, spondylosis fusion है vertebral की, rickets vitamin D की deficiency है. Okay, question number 61. Which feature is possessed by smooth muscles? They are voluntary, no. They are branched, no. They are uninucleated. Yes, that's right. So they are uninucleated. Shredded appearance भी नहीं होती इनके अंदर. So option C was the right answer. Question number 62. The accumulation of lactic acid in the muscles results in extreme fatigue, muscle contraction, paralysis, and convulsion. Extreme fatigue would be the right answer. Muscle fatigue cause करती है lactic acid accumulation. Okay, so the next question is, thick filaments in skeletal muscles are composed of actin, myosin, tropomyosin, and troponin. So the right answer was myosin. Thick filaments myosin के हैं, जबकि बाकी तीनों thin filaments के constituents हैं. Question number 64 was, sarcomere is part of myofibril between two I bands, two A bands, two M lines, and two Z lines. So the right answer was between two Z lines it is present. और इसके साथ हमारे 64 क्वेश्चंस तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. Okay, question number 65. Medulla oblongata is a part of forebrain, midbrain, hindbrain, and hippocampus. The right answer was it is a part of the hindbrain. So option C. Which of the following is not a bone of upper limb? Humerus, ulna, femur, and radius. Femur is not the bone. Radius और बाकी तीनों हमारे upper limb की हैं. Bone forming cells are osteoblasts, osteocytes, osteoclasts, and osteons. Osteoblasts are the bone forming cells. Option A was the right answer. And then the last question was, the chromosome was first observed by T.H. Morgan, Griffith, Walther, and Mendel, and the option C, Walther, was the right answer. So that's it. That's all from the MDCAT 2024 बायोलॉजी सेक्शन. रिलेटिवली अगर हम बात करें तो रिलेटिवली आसान है. इनिशियली शुरू में कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए थे, लेकिन उसके बाद क्वेश्चंस बहुत हल्का होना शुरू हो गया है. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत अच्छा MDCAT हुआ होगा. अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. वेरी गुड लक टू ऑल द एस्पायरेंट्स. जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी गुड लक. मेहनत जारी रखें. थैंक यू सो वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम.